અષાઢ સુદ પૂનમ જે વર્ષની સૌથી મોટી પૂર્ણિમા એટલે કે ગુરુ પૂર્ણિમા કહે છે. 18 પુરાણોના રચયિતા શ્રી વેદવ્યાસ એક આદર્શ ગુરુ માનવામાં આવે છે. તેથી ગુરુ પૂર્ણિમાને વ્યાસ પૂર્ણિમા પણ કહેવામાં આવે છે. A guru is not someone who holds a torch for you. He is the torch. A guru is someone who leads his disciples from ignorance to light and guides them on the right path. गुरु की महिमा इतनी अपरंपार है कि उन्हें तो भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया है. अगर हमें जीवन में दुखों से मुक्ति पानी है और सही मार्ग पर चलना है तो जीवन में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है. As Swami Vivekananda once said, the Guru is the means of realization. He imparts knowledge as a teacher. We, here at Sri Satya Sai Vidyalaya, consider and worship Sri Satya Sai Baba as our Guru. On this auspicious day of paying tribute to all the Gurus, we reverently remember our Guru, Sri Satya Sai Baba, who preached that the first requisite for children is to have love and regard for parents to whom they owe their everything. Let the children, even grown-up boys and girls, touch the feet of their father, mother and gurus every morning before the daily tasks are started. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तस्मै श्रीगुरुवे नमः. Salutations to the Guru, whose form is the entire universe, who pervades all the movable and immovable. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तस्मै श्रीगुरुवे नमः. तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमन है ऐसे गुरु के चरणों में जो अपने अनंत ज्ञान के प्रकाश से अज्ञानता का अंधकार दूर करता है.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। વંદન છે એવા ગુરુને જે બ્રહ્મા જેવા સર્જન કરતા, વિષ્ણુ જેવા પાલન કરતા અને મહેશ્વર જેવા સર્જનહર્તા છે। जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बनकर आता है, हर लेता है वो दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है, न कोई लालच करता है, सच्चाई का सबक सिखाता है, सागर से ज्ञान के भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। परेशानियाँ पस्त करे जब, हारते हम हिम्मत जाएं, परिस्थितियाँ हो धूमल सी, हालात हमें जब भटकाएं, नई एक राह दिखाकर हमको सभी संशय जो मिटाता है, सागर से ज्ञान के भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। नहीं अहंकार में कभी रहे, हर बात सदा ही सत्य कहे, उसके पावन उपदेशों में अनुभव की सदा तरंग बहे। कोई आम शख्सियत नहीं है वो, हर देश का भाग्य विधाता है, सागर से ज्ञान के भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। The tradition of Guru Shishya Parampara is unique to India. भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु और सर्वव्यापी नामों से जाने जाते हैं। सच में नीति के हिसाब से श्री कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं है। श्री कृष्ण अनुसार गुरु और शिष्य का रिश्ता समर्पण के आधार पर टिका होता है। गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने मन पर काबू नहीं रखता उनका मन शत्रु के समान काम करता है, इसीलिए मन पर काबू बहुत ज़रूरी है। It is said that under the guidance of Sri Ramakrishna, Swami Vivekanand found his aim in life and introduced Hinduism, Indian culture and ethos to the world. Under the guidance of Chanakya, philosopher, jurist and a royal advisor, Chandragupta Maurya became both a great warrior and a kind ruler. Teachers are so much more than people who stand in front of you and talk for a few hours. Not only do teachers have to be incredibly smart, they have to be able to understand people and have a passion for what they do. As the tremors of COVID-19 have brought the entire mankind to its knees, the only thing that's keeping us safe in these tough times is the army of frontline workers, doctors who have put their well-being at stake to contain the pandemic. We literally owe our lives and safety to these warriors. But during these testing times, there is a group of unsung heroes who have been working day and night to ensure that the pandemic does not act as a barrier to education. These heroes are the numerous educators, teachers, and professors traditionally known as gurus in our culture and civilization. Undoubtedly, the extensive lockdown has affected a plethora of occupations across sectors. Let's for a moment try to understand the plight of our gurus, our teachers for whom their occupation did not come to a halt even in these terrible times. In fact, there emerged an entirely new set of challenges related to imparting education virtually that they've had to face and deal with so as to not compromise on education. As much as the adjective dynamic describes a teacher best, the remarkable way in which these unsung heroes have adapted and discovered ways to reach out to every single learner during the COVID-19 outbreak displays their steadfast dedication and passion for teaching. जैसे सूर्य बिना कहे सबको प्राण ऊर्जा देता है, मेघ जल बरसाता है, हवा भी बिना किसी भेदभाव व लालच के ठंडक पहुंचाकर सभी को जीवित रखती है और फूल भी अपनी महक में कोई कसर नहीं रखता, वैसे ही गुरुजन भी सदा अपने शिष्यों की भलाई में लगे रहते हैं। સંત કબીરજીએ કહ્યું છે કે પૃથ્વી જેવડો મોટો કાગળ લઈ લઉં, વનના તમામ વૃક્ષોની કલમ બનાવું, સાતેય સમુદ્રની શાહી બનાવું, તો પણ
ગુરુના પૂરેપૂરા ગુણ લખી શકાય નહીં. આપણે ગુરુ પરંપરાને વંદન કરીએ. Now let's ponder upon what these heroes expect in return for everything they do for us. The answer is quite simple: respect. After all, if you're able to comprehend what I'm trying to convey, it's only because of them. It takes a special person to teach children in class, to keep their attention in a world that moves so fast. To show children they are unique with talents deep inside, to help build their confidence so that they can beam with pride. To show a little patience for children who've lost their way, to children who feel abandoned, who have seen better days. To inspire and to motivate so children can learn and grow, to go into this big wide world that has its highs and lows. You are a special person, you always give your best, and for children who have your class, their life is truly blessed. गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा,
चरणों से लगा ले ओ साई पर दीवाने, मुझे चरणों से लगा ले ओ साई पर दीवाने। कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे छोटो सो गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल, छोटो सो गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल। छोटो सो गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल, छोटो सो गोपाल मेरो छोटो सो गोपाल। हे मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल, मदन गोपाल मेरो मदन गोपाल। हे कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे राधे गोविंदे गोविंदे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। हे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। साई रामा साई श्यामा, साई रामा साई श्यामा, साई रामा साई श्यामा, साई रामा साई श्यामा। ओ साई राम साई श्याम, साई राम साई श्याम, साई राम साई श्याम, साई राम साई श्याम। साई राम साई श्याम, साई राम साई श्याम, साई राम साई श्याम, साई राम साई श्याम। ओ साई राम साई श्याम, ओ साई राम